हाय वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टूल टिप को आप किस तरीके से एक इंटरेक्टिव फीचर के तरीके से बना सकते हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड में। सो एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं मेरे पास प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स है। सो पासियो इज़ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड व्हेन आई होवर ऑन दिस ग्राफ शोज अप विच शोज मी कि इस प्रोडक्ट की मेजर सेल्स किस किस कंट्री से आई है। सो आउट ऑफ दिस $33 million sales, I can see that 7.61 million came from Canada, 6.9 million came from United States, 5.23 came from Germany, 7.63 came from Mexico. ठीक है, so this graph changes and it shows me कि किस जगह का कितना कंट्रीब्यूशन कंट्री वाइज है। सो आप ये टूल टिप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है, लेट्स सी। फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। हमने प्रोडक्ट वाइज सेल्स बनाई। दिस इज़ आवर मेन ग्राफ। we will on data labels, we will enlarge it. Now we wanted to add टूल टिप ऑन दिस। तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेश पेज लेंगे। विल गो टू फॉर्मेट पेज, कैनवस सेटिंग एंड टाइप, यू विल सेलेक्ट टूल टिप। यहाँ पे देखिए आपकी कैनवस सेटिंग चेंज हो गई है। इट इज़ शोइंग अप अ स्मॉल स्पेस। इसके ऊपर लेट से हमारे को बनाना है, आप कोई भी ग्राफ ले सकते हैं। लेट से हम डोनट चार्ट बनाते हैं। इट लुक्स गुड ऑन टूल टिप्स। सो and we wanted to create on the basis of country wise sales. Now this is ready. So sum of sales country wise it is showing for the entire data. इस पेज का नाम रख देते हैं, let's say my tt means my tooltip. Cool. Now you'll go to your main sheet where you wanted to connect this tooltip. यहाँ पे आप you have to go to format your page. You have to click on the graph first. When you click on the graph, you have to go on general and you will see key tooltips on it. You have to click on this and you have to select the page. So my tt is the my tooltip, and when I hover on this, voila, this is tooltip activated for VTT product. This is sales by country, contribution by country again. Now interesting thing is कि you can add as many as graphs on this tooltip. So let's say अगर मैं एक की बजाय दो graphs लेके चल रहा हूँ. So again this is a canvas and I want to add a graph, second graph, which will be, okay, let's take month name and what, unit sold. Now the part is key, it will be too much cluttered, but if you want to design, you can add as many as tooltip in a single graph. So we will go to page 2 and it will start showing me two graphs. ठीक है. Now this is not recommended because it will make your dashboard more cluttered. It is advisable to keep it clean, but if you can imagine it, if you wanted to do it, you can add as many as tooltip as you want. It is interactive, it shows data in detail, but it is up to you, up to your imagination how you want to do it. I usually prefer adding just one tooltip, so better to keep it clean, and this will be updated. Cool. We'll connect in the next video. Thank you so much.